चालू हो गया देख। If you want, you can handcuff him. He did say he had a pistol. हाँ ओके, आई विल पे द फाइन। ये फाइन किधर पे करूँ अभी मैं? 10,000 का ही है, 10,000 तो दे दूंगा मैं इसको। Hello, can you stop this? Thank you. Can you help me with the insurance for my car? Is it possible by you? हाँ दिख रहा है क्या? स्ट्रीम दिख रहा है क्या? मैं इधर बोलो क्या? पूछो क्या इधर इंश्योरेंस के लिए? हाँ हेलो हेलो ऑफिसर, आई ऑल्सो नीड एन लाइफ इंश्योरेंस। Not life insurance, car insurance. कार इंश्योरेंस। Car insurance is for SHP. Officer, Okay. I need my insurance for my car. Can you help me? भाई थोड़े लग गए। क्या हुआ? अच्छा फोन है मेरे पास, रुक। फोन बैंक में है। डे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ये सब छोड़। रुक, फोन मेरे को फाइन लगा, कैसे भरूं भाई? मतलब फोन बैंक में जाके भरूं? फोन बैंक क्या है? ओके, मोबाइल खोल के जा बैंक। ऐसा कुछ है ही नहीं इधर। कॉर्नर में बैंक दिख रहा है। इधर वो बैंक नहीं है, कुछ दूसरा चीज है। वो इन्वेस्टमेंट है। मैं अरेस्ट में हूँ 74 इसके लिए। Can you help me with the insurance for car? ऑक्शन गिफ्ट्स सर्विसेज। Hello officer, can you help me with insurance? Okay. पुलिस स्टेशन में से, जेल में से पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। रियल एस्टेट और फैमिली क्वेश्चन है। हेलो हेलो ऑफिसर, हाउ कैन आई पे फाइन? हेलो हेलो, कैन यू हेल्प मी? मैं पुलिस बनना चाहता था, मैं पहले दिन जेल में डाल दिया। अब मैं केजीएफ बनूंगा। फोन बैंक क्या है मेरे को बताओ ना। अरे वो फोन निकाल, नीचे कॉर्नर। वो नहीं है तेरे में आ रहा है क्या? देख वो बैंक नहीं है। इन ब्रांड डार्क मार्केट। मेरा बैंक तो लॉक दिखा रहा है। You really want to buy online banking? हाँ buy. किधर किधर किया तो? देख ना बीच में, एक बीच में, बीचों बीच कार जहाँ कैब सर्विस है ना, उसके ऊपर एक को छोड़ के ऊपर देख, बीच में बैंक है। मैंने ऑन कर दिया। कार सर्विस मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है भाई? बंद है, बंद है, लॉक है, लॉक है मेरे इसमें। 15,000 डाल के उसको ऑन कर। चलो गया बैंक। हाँ पेमेंट ऑफ फाइन्स। कैन यू हेल्प मी hey ऑफिसर? I want car insurance. Can you help me? Where exactly? Officer. Where exactly that is? I don't know. Okay, okay, okay. Thank you. मैं फाइन भर दे। समझा तो नहीं इसने क्या बोला, बट चलो यूट्यूब में देख लेता हूँ। कुछ बोला क्या? कार इंश्योरेंस। मेरे को जेल में मिलने वाला, पुलिस वाले से बात कर। ग्रैंड आरपी तेरे को मिलने वाला है? तो मिल क्या ना, जेल मिलने को है मेरे को जेल में। कहाँ है तू भाई? किधर? मैं कैसे मिलना हूँ? किधर आऊँ? ये देख बता तो मैं आप पे। ऊपर आ, ऊपर हथकड़ी बनी रहेगी देख। हथकड़ी 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 किधर? हथकड़ी ऊपर ऊपर किधर? हथकड़ी
हॉस्पिटल से ऊपर वाला हॉस्पिटल मालूम है तेरे को? ऊपर वाला हॉस्पिटल दिल वाला शेप ढूंढा, मिल गया। हाँ हाँ मिल उससे गया, कफ हैंड उस कफ मिला कहीं पे। हाँ नहीं 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 है ना उसके हैंड नीचे हैंड कफ। कफ। हैंड कफ उसके नीचे है। हाँ उसके नीचे हेलीकॉप्टर है देख, हेलीकॉप्टर के सीधा नीचे हाँ हैंड हाँ कप। दिखा दिखा दिखा। हाँ दिख गया। उसको बोल हाँ मेरे आया। दोस्त से मिलने का। उसको बोल जरा, हम आए। अरे वो गया मेरे को लॉक करके, वो थोड़ी बैठा रहेगा इधर। 70 मिनट मतलब कितना मिनट है? 1.5 घंटा ना? 1 घंटा 10 मिनट। तो पैसा मतलब भरने वाला है ना, भर रहा है कि नहीं, कि मैं आऊँ भर भरने? भर दिया मैंने, पर मेरे को छूट नहीं रहा है, कैसे बोलूं? फाइन तो भर दिया मैं। तूने फाइन नहीं भरा होगा, तूने बैंक अनलॉक किया होगा। नहीं रे, फाइन भरा मैं। कितना भरा? 20,000 रुपए। 1 घंटा जेल में डाल दिया बेंच। जेल में बैठ के टाइम पास करना पड़ेगा। 1 घंटा गेम चालू रखना पड़ेगा तेरे को। और कुछ ऑप्शन है क्या? ठीक है ना, हो जाता हो इधर बेड पे। क्या नाम है इसका? होते कैसे जी एक्शन स्लीप स्लीप है क्या? यहाँ पे बैरिकेड्स लगा हुआ है बेंच। पुलिस वाले से बात करके ऐसे नहीं आ सकता, फुल अंडरग्राउंड जेल है। देखना स्ट्रीम कहाँ पे? में। दिखते, चल पहुंच रहा हूँ। पुलिस वाले को बोला आई वांट टू मीट क्या माय। बोला वो? क्या बोला वो? वो बोला यू डोंट हैव द राइट्स टू टॉक, रिमेन साइलेंट। ऐसा कैसा इंग्लिश पिक्चर में बोलते, वो बोल के गया बेंच। सर्च किया, नंगा करके छोड़ दिया जेल के कपड़े में, सिर्फ फोन दिया हाथ में। अब उन जेल से बिजनेस करते हैं, बात चुता है। ऑक्शन, ये देख हाउस नंबर 60। ये देख हाउस, इधर घर है ना साले। फोन में जा, रुक रुक रुक, लोकेशन भेज। फोन में जा, ऑक्शन में जा, देख कितना सारा घर है। मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया है तो। तो कितनू सा है देखना। 5.5 लाख में दोनों मिलके तो ले ही सकते हैं भाई। हम्म, क्या हो गया है ना? आ गया मैं। पार्किंग तो मिलेगा। उसको बोल माय फ्रेंड इज इन जेल, उसको छोड़ने के लिए क्या करना? कुछ तो कर, जेल से छुड़ा मेरे को। इधर को भेजू क्या पैसा? कौन सा पैसा? रुक जा। तेरा बैंक अकाउंट में मैं अपने फोन से पैसा भेज सकता हूँ सर। क्या बात है? हम्म, मैं नहीं आ सकता अंदर। पुलिस वाले से बात करके भी नहीं आ सकते क्या? हेलो ऑफिसर, हेलो 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 ऑफिसर। अरे भाई क्या मारे 67 मिनट है, भाग जाना चाहिए तब पे, जेल में डाल दे। क्या कर रहे गड्ढा? हेलो ऑफिसर, हेलो ऑफिसर, हेलो ऑफिसर, हेलो ऑफिसर, जेल में क्यों डाल रहे यार? हेलो ऑफिसर। मैं नो हाउ टू गेट कार इंश्योरेंस। Where exactly? Where exactly? SHP. Okay. Oh, I got it. SHP. Yeah, it's something written.
हाँ 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 हाँ। ओह ओह, थैंक यू। SHP यार घुस गया मैं स्टेशन के अंदर। सब लॉक है, बाकी अंदर जाने दे तो नहीं रहा। समझा, पुलिस भी है भाई, स्ट्रीट ऐसा ही लेके घूम नहीं सकते भाई। तो मैं भी एकदम हेलो हेलो हेलो। SHP जाता हूँ मैं। SHP हाँ मिल गया। SHP क्या है? दिखा तो रहा है यहाँ पे SHP। अबे वहीं पे तो गया था मैं। ये बहुत कुछ है बे, काउ शेड, डाइवर, इलेक्ट्रिक स्टेशन 5 कर दिया भाई। चलो इतना नहीं था। एक्सक्लूसिव क्लोथिंग, मैं टाइम पास कर। के बैटल पास में क्या कह रहे थे? अब 1 घंटा वही कर। बैटल पास तो और प्रीमियम क्या है बे, अलग अलग है क्या? हाँ तेरा कितना मिनट बाकी है 55,000 के लिए? 55,000, अभी 1 घंटा बाकी रहे। तेरे को नहीं दिखा रहा? दिखा रहा मैं, मेरे को 2 मिनट 1 घंटा, बाद। मैंने 1 घंटा बाद, 1 घंटा में ब्रेक बंद किया था ना ये। ये बैटल बस में गाड़ी वगैरह मिलता है भाई? क्या बैटल बस में क्या गाड़ी, मस्ती थोड़ी एक कर फाइल रहा हूँ। बराबर देख। बराबर ही देख रहा हूँ मैं। 3 गाड़ी तो मेरे को दिख गया। कौन सी गाड़ी है, नाम बता। रुक, एक सुमो है, एक ऐसा नॉर्मल है और एक स्पोर्ट्स कार है। एक प्रीमियम में गया तो एकदम 98 लेवल पे तो स्पोर्ट्स कार है वेंचर। इसको ऊपर कैसे जाऊंगा, पीछे कैसे जाऊंगा? स्टार्टिंग से बता था, लेवल 1 से बता। लेवल 1 में पैंट है, ये सब है, ऑयल कैन भी है, दवाई भी है। लेवल 6 से 7 में कपड़ा भी पड़ा है, ठीक है। 15 तक भी कपड़ा है। फिर गाड़ी है देख, नीचे डायरेक्ट स्पोर्ट्स का। इसमें क्या है? जूता है, रस्सी है। अच्छा, कैन यू हेल्प मी विद कार इंश्योरेंस? हाउ टू गेट दैट कार इंश्योरेंस? हेलो हेलो। ये देख, तेरे को फोटो भेज रहा हूँ मैं। आई नीड इंश्योरेंस फॉर माय कार। फोटो देख। प्ले स्टेशन। यस। ये देख भाई, ओके। पुलिस स्टेशन कहाँ है यहाँ पे आपके पास? 30 ग्रैंड कॉइन। यू मीन सेंट्रल पुलिस डिपार्टमेंट?
ओके ऑपोजिट साइड ऑफ द ओके ओ कहाँ है रे पुलिडो, कहाँ है रे? तो वो दिखा क्या? क्या बोलता क्या बोल रहा है पुलिडो पुलिडो? बुलीडो कहाँ से बुलीडो लूँ? इंश्योरेंस लूँ? ओ ये रहा है सच। चलिए तो मैदान आर अबे और इसका सिस्टम देख। हेलो सुन बोल सुन, इन लोग बैटल बोल। पास लेना है ना तेरे को, तो हम्म, इधर क्या लिखा है, ग्रैंड कॉइन्स कैन, सुन, वी डू नॉट सेल कितना? ग्रैंड कॉइन्स फॉर रियल करेंसी। मतलब तो बैटल पास का कॉइन जो लगता है ना अपना, पॉइंट्स, हम्म, वो तू खरीद नहीं सकता असली पैसे से। वो तू कमा सकता है, कैसे मालूम है, गेम में से ही। एक ग्रैंड कॉइन कोई मिलता है मालूम है अपने को, एक घंटा, हाँ वो ग्रैंड कॉइन मिलता है, वो इसमें जाता है अपना, इसमें तो जितना ग्रैंड कॉइन रखे उससे तो डायरेक्ट बैटल पास ले सकता है। ओके नहीं ये भी इधर ठीक है। है, बाय 10 GC, बाय 40 GC, बाप रे, हाँ टेक द कितने रुपए का? एडवांटेज। हाँ, कितने जीसी का बैटल पास है फिर? फॉर, डू यू रियली वांट टू बाय प्रीमियम? नहीं, तेरे को ग्रैंड कॉइन लेना ही पड़ेगा, 30 का एक हाँ है, वही वो ग्रैंड कॉइन नहीं बेच रहे वो 30 लोग, का। और कुछ बेच रहे नहीं। 30 रुपए का एक? यहाँ पर ग्रैंड कॉइन तू खरीद नहीं सकता ना पैसा डाल के, सीन वो है, समझा क्या? क्या खरीद सकते हैं हम लोग? कुछ तो खरीद सकते हैं। कुछ नहीं खरीद सकते। वैसा नहीं होगा। अरे कुछ तो देख, खरीद बेच। आ जा देख, देख, रुक तू जा पेट्रोल ग्राइंड भरता हूँ। तू ग्राइंड कॉइन से गेम में पैसा ले सकता है, समझा क्या? तो तू कुछ हाँ खरीद नहीं हाँ। सकता। ये सही है वेंचर। अभी उसमें देख, अबे इन ग्राइंड लोग ग्राइंड कॉइन कमाते कैसे है वो देखना पड़ेगा अभी। तो एवरी आवर हमको लेना पड़ेगा इसमें। ठीक। एक मिलता है, कितना ग्राइंड कॉइन मिलता है? एक मिलता है ना हर एक घंटे का। हम्म, हाँ, हाँ। तो 30 ग्राइंड कॉइन मतलब 30 घंटा खेलना पड़ेगा, 10 दिन। हम्म, 10 दिन में रोज 3 घंटा खेलेगा तो वेंचर तेरा एक बैटल पास होगा तेरा जाके। रुक जा मैं भी अभी देख रहा हूँ, रुक। किधर देख रहा तू? एम दबा के शॉप में जा। शब माया, हाँ। हाँ देख, उधर देख क्या लिखा है। मेरे पास 5 जीसी है। हाँ, बाय 10। ओके। भाई 10 नहीं, वो 10 से तू ये खरीद सकता है। इंस्टेंट ट्रांसपोर्ट डिलीवरी। इलेक्ट्रिक स्कूटर, लाइसेंस पैकेज, लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट 25 GC, इनफाइनाइट लाइसेंस, बाप रे। 110 में ये मिलता है। ये प्राइम में ना, प्राइम में क्लिक किया तो देखिए ये सब है, बैटल पास आएगा तेरे पास। 10 GC में ये, 40 में ये। बैटल बैटल पास से देखो क्या है। बैटल पास में पैंट है, चिकन है। ओके और क्या है? नहीं, वो बैटल पास ऊपर वाला है ना, वो प्रीमियम है, और नीचे वाला मैंने बैटल आप पास है। मैं नीचे वाला ही देख रहा हूँ क्या है हाँ, देख। नीचे वाला देख ले। नीचे वाला कुछ गन क्यों दिखा रहा है? हाँ वही ऊपर वाला ही। लेवल 20 पे गाड़ी है दोनों में। हम्म, बकवास गाड़ी। अरे पता और मेरे को पैसे, पैसा भी 35 पे भी है। 35 पे का। ओ ये गाड़ी देख रहा हूँ मैच। फ्री वाला बहुत बकवास गाड़ी है। 35 पे गाड़ी है, 80 पे दो, एक गाड़ी है, 94 पे एक 48 गाड़ी है। 43 पे कौन सा बैग का हुआ? लेवल 4 है क्या? माई जॉब, माई जॉब, मेरे को तो प्लेन ही चलाने का है भाई। ओ भाई 60 की गाड़ी है। 80 पे क्या खतरनाक गाड़ी है ओ भाई। गेम खेलना पड़ेगा भाई, तब जाके अपने को कुछ मिलेगा। मेरा 250 पॉइंट हुआ है। क्या? मेरा हुआ है 250। 250? 98।
मेरा 625 हुआ है 1000 में से। अच्छा, यू हैव हाँ, पॉइंट, मेरा 750 दिखा रहा है। अंटिल द नेक्स्ट लेवल। उसमें राइट में येलो कलर मिशन में से ना, देखना, राइट में येलो देखना। कलर ना। हाँ येलो कलर में राइट में मिशन देखना उसका। कंप्लीट 6 देखा देखा। क्लब टास्क, रोज राइड अ 10 कैब, ऑब्टेन 1 पाइनएप्पल सीड। ड्रग्स और कोकेन कैसे यूज करे, ड्रग्स कैसे यूज करते हैं? ड्रग्स, रुक जा, गेट मैरी कैसे होते हैं, मैरी कैसे होते हैं? बोलना पड़ेगा ढूंढ के, मैरी करो करके। वो तो क्या अपन दोनों ही कर लेंगे, बात तो नहीं। सकते हैं क्या है, गेम में हो जाता, चल अचीवमेंट्स, हो क्लब ऑफ जाएगा। इंटरेस्ट, क्लब ऑफ इंटरेस्ट। हाँ ये नया आया था ये अपडेट, क्लब गेट ऑफ इंटरेस्ट है गेट टू ना। सुन ना, गेट टू बैरल दिख रहा है। तू कहाँ एम है क्लब ऑफ? एम दबा और उधर क्लब ऑफ इंटरेस्ट लिख के आएगा देख। एम दबाया। तो इसमें ना देखा है देख, बोलेगा देख। मतलब ये रेसिंग है, रेसिंग रेसिंग है ये, बीच बीच में रेस रहेगा तो तेरे को बुलाएंगे। पार्टिसिपेट करूँ क्या? रेस टेक्स प्लेस एवरी 4 आवर्स देख। तो ये सब रेस है। हाँ किया, मैंने क्लिक किया तो मुझे इंडिकेटर दिखा रहा है, यहाँ पे जाओ, चोरी करना है। ये सिस्टम अच्छा है मेरे को स्टील एप्पल। स्पेयर पार्ट फ्रॉम, पार्टिसिपेट इन जनरल एक्टिविटीज, प्लान अ रूट। मतलब ये गेम यही है कि मेरे को ये चाहिए अभी, इलेक्ट्रिक स्कूटर। हाँ तेरे को इलेक्ट्रिक स्कूटर दिख रहा है? हाँ, शॉप में कहाँ जाओ, दिख रहा है? शॉप में जा, हम्म, हम्म। देख पॉपुलर में जा और नीचे देख। अब हम जीसी बाय कर सकते हैं। डू यू रियली वांट टू बाय, डोंट हैव इनफ डोनेशन। इधर बाहर इसमें जा, कैसे? कोडा शॉप में जा, कोडा शॉप में जैसे को मिल जाएगा। नहीं रही। हाँ रे बाबा। उसमें 65 जीसी में तू पैसा खरीद सकता है, वैसा है वो। अरे इतने मैं में। पिछली बार ही बाय करने जा देख रहा था। पिछली बार मैं भी वेयर गया इज था, पर मैं गेम में से ही गया था। कोडा शॉप, ग्रैंड आरपी जीसी परचेस। वो 800 1000 रुपये रहेगा और क्या। दूध लेके आ रहा Yo, officer, pick me चल up पहले already, bro. जीए लेने जाता हूँ। कोई कॉल करा था क्या? Who the fuck are you? That's हाँ, अभी एक बार तो इसका बैटल बस लेना ही पड़ेगा, खेल खेल के मजा आएगा वेंचर। मीट 3 न्यू पीपल, यही बाकी है मेरा। ये ट्राउट क्या होता है? TROUT, क्या? TROUT ट्राउट करके लिखा है यहाँ पे इधर मेरे इसमें। यूजर यूजर मछली का नाम है भाई।
ट्रकर का स्किल मेरा ये देख इधर दिख रहा है ट्रकर का स्किल सब। इसमें सब कुछ दिख रहा है अभी। मेरे पास तो एक ट्रक का स्किन था, स्किल पता नहीं स्किल कैसे दिख स्किल स्किल किल। हाँ ओके। स्टेटिस्टिक्स में गया ना, हम्म। उसमें माई स्किल्स में जाके शो करने का तो लेवल बताता है कौन से लेवल पे तो। ओके स्टैटिस्टिक गया, उधर माय माई स्किल्स शो। हाँ, देखो उधर लिखा है देख। बाय स्किल कंट्रोल ट्रांसपोर्ट। ओ किसी में भाई तो टिक मार्क आया रहेगा देख। टिकमार्क मेरे को व्हीकल कंट्रोल में आया, स्टेमिना में आया, ट्रकर में आया। मेरे को ट्रकर स्टैमिना में अभी तक, व्हीकल कंट्रोल में अभी तक आया नहीं। टिक मार्क क्या एक लेवल है कि दो लेवल है, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ मालूम, स्किल ऑफ ए कैरेक्टर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये मेरे को बाय दिखा रहा है, allow you to drive transport faster। तो पैसे से बाय होगा ना, मतलब इन गेम पैसे से। ले मैंने बाय काय को बाय किया, वो तो ऑटोमेटिक गेम खेलते खेलते हो जाएगा। ये है मेरे पास ऑलरेडी है वो उसके, हम्म। फास्ट गाड़ी भगा सकता हूँ। अब क्या ग्रैंड आरपी ना, मैंने कहा कि मैं यूट्यूब करता हूँ जेल में बैठे बैठे। कर कर कर, ग्रैंड माउस आरपी हिलाते रहे मगर। हाँ हाँ, वो तो हिला रहा। उधर देख जरा जीसी क्या सही रहेगा अभी। गेम खेल के जीसी बनाते, पैसा नहीं डालते। एक एक फर्स्ट टाइम हाउ टू गेम खेल गेट के बनाया। जीसी क्विकली, हाउ टू गेट जीसी। हाउ टू गेट जीसी इन ग्रैंड आरपी। ये 5-6 महीने पहले मैं भी काश ट्राई मेरा किया। स्ट्रीम होता, इतना तगड़ा स्ट्रीम होता ना आज, मजा आ गया होता। क्या क्वालिटी चल रहा है गेम का। नहीं है रे, नहीं। मेरे को एक जगह लेके ही चला गया था भाई। अच्छा उनके वेबसाइट पे होता है बाय, हाँ याद आया उनका वेबसाइट उधर बाय होता है, उनका खुद का वेबसाइट, ग्रैंड आरपी के वेबसाइट में ग्रैंड जीसी मिलता है। आरपी, ग्रैंड आरपी खोला मैं। अपना सर्वर क्या है, वन ना? हम्म। कौन सा सर्वर वन है पर अपना? वो आराम से। मालूम नहीं, प्लेयर आईडी डाल तो सर्वर वन डाल दे। नहीं वो सर्वर में ही तेरा हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं हाँ तो उसको। क्या हो गया, सर्वर वन में ही हम लोग हैं वैसे। अरे इधर बहुत सारे सर्वर वन, बहुत सारे है ना, पर इधर 1 2 3 4 सर्वर, 5 6 सर्वर वन है। अपना वाला कौन सा सर? ओके अपना वाला इंग्लैंड का है क्या टोटल ऑन, कि जर्मनी वाला है? वो कैसे पता चलता है? उनके वेबसाइट पे देखना भाई। वेरीफाई इंटीग्रिटी। इधर नहीं है भाई, इधर कुछ नहीं है इनके वेबसाइट पे तो कुछ। मेरा स्ट्रीम क्यों बंद हो गया है? तेरे को मालूम? दो वीडियो भी जाने वाले, बस स्ट्रीम चालू है ना, स्ट्रीम तो चालू है। मालूम भाई, नहीं देख रहा। मैं तो खुद ही देख रहा हूँ। मैंने कलर करेक्शन गैस अपने मॉनिटर का, क्या गया? कलर करेक्शन मॉनिटर का। कर दिया कैसे? ये एनवीडिया कंट्रोल पैनल में जाके और मस्त दिख रहा है। कैसा करने का मेरे को बता। वही कंट्रोल पैनल में जा एनवीडिया के, हो जाएगा। राइट क्लिक, क्या इधर आके नहीं रहा है। NVIDIA कंट्रोल पैनल खुल रहा है। 2K में खेलने का मजा ही अलग है यार। 4K में क्या बाप लगता होगा। फाइनली उसके मैं पहुंचा। उसके लिए RTX वगैरह चाहिए ना, 4K के। हाँ मेरा RTX ही है ना, इसलिए हुआ। इसलिए तेरा अच्छा दिखा रहा। मेरे में तो नॉर्मल दिखा रहा। खुला ही नहीं है। अभी क्या करने का? हेलो 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 हेलो, अरे 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 क्या हो रहा है ये? कैन यू हेल्प मी विद कार इंश्योरेंस? कलर करे किधर गया? रेड वन, रेड कलर।
अबे कलर करेक्ट किधर किया? दिस वन या एडजस्ट डेस्कटॉप कलर सेटिंग। रुकना थोड़ा व्हाट आई शुड गो इनसाइड द कार ओके 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 जान दे बाद में करता है सर। 50 मिनट है। हेलो ओके पासपोर्ट ओके पुलिस वाला इंश्योरेंस बना रहा है मेरा हेलो गाइस एंड वेलकम टू Asking me in comment sections and over DMs why I stopped playing with my RP. थैंक यू मेरे को 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस बेचा है भाई आज 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस माँ कसम एनीवन विद फैमिली तुम लोग अभी तक लो भाई तुम लोग अभी तक आर पे खेल रहे हो? मजा आ रहा है अरे यार मेरा तो ये रॉकस्टार गेम्स लॉन्चर नहीं चल रहा पता नहीं क्यों वापस इन्होंने प्रॉक्सी करके रखा है इतने साले ईशान का क्या बोला टिप्स तूने बॉल भी नहीं किया आज कुछ क्या हुआ बोलना खेल रहा है हम लोग तो ये वैलो खेल रहे थे अब ये क्या है ये इधर किधर पहुंच गया वैलो खेल रहा है इसका तो जा डेस्टिनेशन रहा हूँ मैं हाँ इसका जा रहा हूँ मैं ओके ठीक है चल बाय बाय हाँ केला একটু ওটা মা জলের বোতল দেখো তো अब बोल मिल गया मेरा इंश्योरेंस देख देख बैटल पास का क्या क्या है। तुम दोनों को मिलवाने के लिए इतने सारे ड्रामे किए और अब तुम अपने प्यार को ही मारने चले इससे कुछ हो गया फिर तुम क्या करोगे और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करता तुम दोनों की शादी करनी है मेरे पौधे का क्या इस लड़के से उसके लिए जो तुम्हें प्यार करती मैं थोड़ा हेडफोन निकाल के साइड में रख रहा हूँ 5-10 मिनट बाद आया मैं ठीक है
हेडफोन का कुशन पूरा भीग गया है। लुल। Five percent these settings here. The lower that you set them, the better your FPS is going to be in game. Of course, if the game starts to look really bad after changing something down, you're more than welcome to turn it up at the cost of 1 or 2, give you a few more FPS. It really has very little very down to the bottom. Processing effects, and the higher that this is, the more FPS you'd expect to lose. And I would think, especially while you're in the options menu, as soon as I pressed escape while in the single player campaign, everything just completely died. This is probably Okay. क्या सीखा? अरे मैं सेटिंग कर रहा हूँ कौन सा सेटिंग? ग्राफिक। क्या भेजा मेरे को व्हाट्सएप पे? देखा नहीं मैंने। अरे वो बैटल पास भेजा मैं। अरे मैंने एरोप्लेन मोड डाल के रखा आज। इतना बिजी हूँ खेलने में। अभी भी मैंने बैटल पास का कार देखा एक दिन high and normal is relatively the same, but pushing it up to very high will cost you about 8 FPS or so. I'll leave this on, say, normal. Or maybe VRAM, there's not too much of a difference. Again, there's about 300 megs between the Ultra and the normal settings here. So I'll usually leave this on normal and reflection MSAA off entirely, or 2x if you really don't like jagged edges and reflections. Water quality wasn't listed on the Gamers Nexus benchmark. फिर मैंने स्टॉल कर लिया पार्ट्स। Whenever you have this set your settings, you'll lose quite a bit मैंने more पार्ट्स स्टॉल किया अभी। location. And that really doesn't mean much for FPS. It's just user preference. We start with particle really going to be a difference between a very high and normal. I believe there's none of that going on at once.
Same goes for tessellation at the very bottom here. It's not really प्रैक्टिकल क्वालिटी हाई ग्रास फाइनली व्हीकल आ गए हमारी between व्हील्स। one of basically no impact on FPS. We start with FXAA, which we already covered. Distance scaling at 4K, shadow smoothness, रीस्टार्ट होगा भाई 1.5 लाख के तो व्हील्स है इसके। in many places. Long on high resolution shadows obviously will cause FPS drops. High detail streaming while flying. This really depends on the speed of your hard drive or SSD. If you have an SSD or NVMe, you can probably have this on comfortably with nodes from further away. क्या देख रहा No. Finally, frame further away. क्या देख रहा है? अरे ग्राफिक सेटिंग बेस्ट क्या रहेगा गेम के लिए ओ भाई ये चाहिए कलर ऑफ व्हील तगड़ा। ये थोड़ा लग रहा है सही है। क्या देखते रहते हो पूरे दिन न्यूज़ चालू है। Hey, what's going on, people? You have to go and download Nvidia GeForce Experience. के लिए बहुत हाथ में पैसा लेके आना पड़ेगा इसके लिए कार मॉडिफिकेशन के लिए। To keep this off, and prefer maximum quality texture filtering and isotropic sample things over here. And then in this button down below, it really helps me out. Go down and find the adjust video color settings over here, and then in visibility while you're playing games like Fortnite, CS:GO, Valorant, and much more. What is going on, guys? It is 5 going to compatibility, disable full screen optimizations, change HDPI, override, apply OK. Override high DPI. The high DPI is on the in-play GTA modifier, which can further reg optimization fix it. Now, for the most part, if you're running a decent PC and just looking for an FPS increase, keep this to your native resolution. For me, it's going to be 2560 p. And you can set the population density. मैच देखेगा क्या कौन सा मैच? चलो 1 घंटा मैच देखता हूँ गेम चालू कौन सा मैच? वैलोरेंट चालू है अच्छा प्रू वर्सेस 100 लगा स्क्रीन शेयर कर। इसमें ना डबल स्क्रीन है ना एक में GTA लग के दूसरे में डिस्कॉर्ड डाल देता हाँ उसमें वैसे ही हूँ। शेयर स्क्रीन ना स्मूदर वीडियो वो लाइव योर स्ट्रीम इज स्टिल रनिंग दिख दिख रहा है क्या देखो स्क्रीन हाँ दिख
सिर्फ वो यूट्यूब ऐप भी तो वही चलेगा, सिर्फ वो ऐप शेयर करेगा, क्या चलेगा? यूट्यूब का टैब। वही चलेगा ना? हाँ चल रहा है ना वो चल रहा है वैसे अभी। लाइव? ये क्या सिटी अमेरिका? in the world, but it's not a great start, and so far you've got to be able to pick up that confidence somehow if you are 100 Thieves. जेल में बैठे बैठे No major ultimates really on board as well that they can craft a game plan around. That's another thing where 100 Thieves have had some level of predictability. However, we're looking towards Cryo with a Blade Storm. Could be a difference maker. Moves forwards, can't get the kill. Davies just using his own fragment nade as well. There was no follow-up there because of that prior util. और एक बंदा है मेरे पास जेल Timing में. dash still active for Kisnet, but no fight to be taken anytime soon. The dark not being cleared right into the smoke. It's picking them apart. And they just cannot withstand it. It's flawless once more from Crew. 6-0. An absolutely dominant lead. And Crew are definitely favoured on this side of Ascent. Their attack side in the past has looked fairly weak. Not as weak as 100 Thieves, I would say, but definitely not the greatest. So the question becomes, how many rounds do 100 Thieves need on their attack side here? And I would be saying minimum. स्टील करने क्या करना होता है? देख तो जरा क्लब को. Minimum. Interest They've still got chances, but that means they need to win. क्या? मुझे तेरा सिर्फ डिस्कॉर्ड दिख रहा है. क्या दिख रहा Crew है? are gonna तेरा सिर्फ डिस्कॉर्ड दिख रहा put है. on the throat, make sure that मतलब cannot happen. यूट्यूब नहीं दिख रहा देखो. नहीं तो Snake Dude, used man. early on there just to try and threaten that they could be taking control of A or to push them away. तो उससे अच्छा बाजू वाले इसमें ये लगा देना मैच लाइव तो चालू है डिस्कॉर्ड में तो डिले हो जाएगा. 100 Thieves to deal with. There are two players, Stellar and Derek, one orb away from being able to get their ults on. बाजू वाला टैप में यूट्यूब चालू करके मैच चालू कर दे लाइव ही वैसे भी. And look how active Crew are. They flushed out B main early. Now there's still more than a minute on the clock, and they've taken mid, or at least pushed people up close. Giving up a lot of. बाजू वाला टैप में मैच लाइव ही है. मजा आएगा देख. 6-0 हो गए. Has to try and help 100 टीम में एक बंदा बैठा है देख. Crow's going to see if he can do any दो sort बंदे. of damage. But it's a little Get bit kill लगने tempered वाला. now. Any aggression that was planned has been stopped in his tracks. And look at that with the dash active. There's no value to be gained from it. देखना कैसे बैठे Doubled थे. up setup of वो सोवा खेल रहा है ना. Nag said, pushing all the way through. वो लास्ट तेरे को मैच बताया ना टकला हुआ है. It's just untested in mid. Eventually we'll fall, but guess what? Klaus is also going to be there to pick up any sort of potential pieces. And Derek doesn't know where to look. The Viper's been dropped down. It feels फिर गोली like मार दिया भाई एक को तो माँ कसम जेल में गोली मार दिया 20 उसको. seconds left in the round. What more can you really play for here? And it's just the angle being spammed. Everything working perfectly there for Crew. They flush out B main. They make Derek so scared he has to use his drone from basically spawn, and then they go and pressure mid, and every player that wanted a piece of that fight in mid got something out of it. Yeah. 100 Thieves weren't able to flush them out. Crew aren't scared at all. And like I said, they're going to limit test. When they realize that 100 Thieves are not putting up any resistance, they're going to limit test. I mean, this looks like a 13-0, you know, Eccles getting dropped kind of. Oh, God. There's no reminders of that one. Damage through the wall. Look at that one. Yodin spam. Still is almost going down from it. Now they want to pop into B. Straight through Kesnet. How's he managed that one? Just tracking perfectly. Heard Cryo dash towards the switch. Knew where to be spamming it through. It's up to Bang. What more can he do? Drop down onto the side. One kill. Second one found. Still alive in the action. Derek's got his back. Maybe this is what they need to try and get back into this one. But immediately, look at that flooding straight through. And the spike. No chance in hell of that one going down. Oh, Back, he's on the 26 health. Got to do so much in the moment. Down to that one-on-one. Goes to the side with a fragment. निकालेगा यार. निकाल लिया बे. My word, they needed that. An absolute hero play from Bang when they needed it most. Like backs against the wall, Bang with nobody really to play off, just Hello. leaps into sight किधर गया रे? and finds them 4 kills in the मैं? scrappiest manner possible. इधर ही हूँ गाड़ी चला रहा हूँ. He has been the best player for 100 Thieves. This very young guy keeping his head in a moment where everything is going wrong.
And now 100 Thieves take a timeout. Their second one of the map already in the first half, which I think is quite telling. Yeah, quite telling about the current state of the team. Something's been spotted here. Something's going wrong. I mean, yeah, but what do you focus on? What's the biggest issue here to get them across the line? Even the way that Bang wins that, it's not a really drilled site exit where everybody's playing perfectly and he gets the kills off the util. It's scrappy. I think they're rushing into things. मैं Red Gang अंदर जा रहा हूँ. Missing this hesitancy in terms of how they're trading and playing. Red Gang join. There's too many gaps in the play. Another thing that 100 Thieves will be discussing here potentially is how to use their ultimates to win the next round. There are none on board for Crew, and Derek has his Hunter's Fury, Asna has the Null Command. Now, Derek has been punished going for these Gelato Hunter's Furies. You saw Sean break down a play earlier where he's been using it How from to that join point, and Cloud9 just got the read. gang? Used it twice in their attacking half. So I would expect Derek to switch it up a little bit here. Asna has been a bit varied in terms of how he's been setting up that ult play, but you know, from what we can see, it looks like they're going for a fairly default, just hard B hit with Derek ulting from tiles. I want to join your. किसको पूछ रहा है बेंचो? What's up there with a knife, but disrespecting. I would like to join your gang. Getting away with murder, but सो आगे गांड देगा अभी. it's time to strike. Coverage though. Okay, pushing it back, but bang! Okay, wait. No way. Davies is there to return the fire. Bang was just trying to follow up on it, all that aggression, but they have managed to at least make their way into the site, but they have to deal with the back of it. The players anchoring, nice and still there, ready and waiting, maintaining, holding. Flashes to the face of Cryo from every single angle. He just can't do anything. Okay. Crew overwhelming them. Yeah, Bang maybe fired up. I don't know any previous round. She yet. used to try and take हाँ, a fight. लिए, Thinking it's चौथा मारा. punishable, doesn't realize that there's two players there. I think maybe gets a bit Where unfortunate, exactly I but can also go forward overstepped, and I read the think, boots? a little. Do And we then have also any kind once of 100 Thieves Discord? back into the site, it's Cryo trying to hold off the rotators NAL, instead of okay, helping his team okay. get deep into the site. So क्या people बोलता are है? playing strange Sure, roles thanks. based on where. So, you am I expect eligible? them to be. And Crew just tear it to pieces. Look how aggressive Okay, Kesnit is in okay. those kind of moments. He looked like he wanted to run Derek down. Thank you so much. Thank you so much. क्या बोला रे? Limit testing. गैंग का रूल पढ़ के आने Those को देना. openings that listen, Crew are ये affording by playing ग्रैंड that आप में aggressive. कहाँ Okay. मिलेगा गैंग? येलो गैंग, रेड गैंग, ब्लू, पर्पल. यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो. Kesnit is just following every Red piece of utility. and Oh, you're using initiator utility in mid? Oh, Mm. I'm डाला gonna ग्राउंड get आरपी the kills गैंग on you. रूल्स. It's a scary सारे गैंग है. player when you're up against him and he's got his confidence हाँ, up हाँ, early. वही. Can be hot or cold at times, and sometimes Third even just RP. overheating. But But he's currently 16-3, I think. exactly. And he's got 5 health, and I think he's still Gang going to in try and find GTA kills. And when he feels like he can fight every single battle, every single duel, and win it out, he's going to take those fights, even against the weaker guns. Not worried about it, but there we go. Maybe a mistake opened up for it. So, rifle dropped all the way to the back, probably not retrievable. And a flood instead, straight through into market. ये स्ट्रीम देखने से अच्छा मैं वो Site देखता still हूँ. anchoring in these positions. हाँ वो देखना फिर. Turning forward, Paranoia's मैं तो good. जेल में हूँ इसलिए देख रहा There's हूँ. a one-way in all of their faces, and nobody can really scale up. There तो was a उल्टा वो भी snake वो bite. भी They're वही all, in देख. fact, at their feet still. देखा हमने. देखेगा और गेम ही चालू नहीं है. Couple of upgrades with the rifles now, तो and the weapons YouTube में the देखना spike ना. has to go down, and it भूल will जाऊंगा do मैं 1 just घंटे that. बाद. क्या देगा? And this round looking गेम massively चालू कर winnable. रखते That रखते मैं flash कर combo तो of सकता हूँ वो Astra and चीज. Bang made a lot of difference, even though there was a mistake with the snake bite. How Can to they join a easy gang in Melza India? get यहाँ in हिंदी here? हिंदी Both बोल रहा flashes है. and Paranoia still ओके available. सनातन ही बन Tons of गया. people available. In fact, Davis could use absolutely everything here and get a lot of value. Fragment nade against the box. That's going to push the common position out as Cryo has to adjust. Flash into the backside, but there was no second peek by Melza. Couldn't quite find his way in there, and at this point, just opting most likely into saving has to be the percentage play. It does mean 100 Thieves will be claiming this round eventually. They'd love to get another rifle out of the hands of Melza for it, and they will do just that. So, 2 on the board. Josh, you said 3 in a pistol, maybe winnable, maybe doable. I mean, that's the bare minimum, I think, and 100 Thieves might just be clawing their way there. We had that comment when they were down 7-0, and I said that they needed to win half of the, 6-0, and they needed to win half of the upcoming rounds. That's exactly what they've done so far. Lost 1-1-1, lost 1-1-1. And this particularly being a thrifty. This is a massive turning point. It could be. And in fact, for 100 Thieves, it has to be. Kesnit has now picked up an operator. We're heading into this next round with Kesnit trying to get some space over in B main. Crew have been playing incredibly grouped up.
Kesnet's been supported usually with a lot of the utility from both the initiators. This has been just heavy how they're playing the defensive protocols on this defense side. It is really strange to see Derek being the player controlling B main rather than using his Sova utility for them to take space, but this drone is just supposed to be a bit of a fake and open up space on Cat. Right, Still two players here. Yeah, spamming the common positions there through the smoke, hoping for an easy kill. Cheap one of that. No clearance though of all of that util, and look at the way it's delaying them. That's so much damage. Corralled into the corner. Chunk down. Bang on 60 health moving forwards. Spike, it's so precarious. Look, no confidence in the way they're taking this one, but now Hunter's Fury to try and disrupt this plan. Derek's looking this way, that way, doesn't know which way to look. And now will the fight be taken by Crew? There's that 4v5, a slight advantage, more utility being used, chucked up to the top side of heaven there with a fragment nade. Pushes them back for but a moment. This is where big plays potentially need to be made in the 4v5. Cryo looking for anything. Bang has an ult potentially to reposition. The flash not comboed with the peak, but just to kind of keep Crew back. Paranoia is good though. Clears all the way through, drops down, Naxus right in their face, Bang. Has to hold it down, has to hold the line. As the players are swarming the position, everything's known, drops down, Angle wants for it's a one-on-one. Stella versus Davies. Just these need to win this one. Time pressure placed onto Davies' shoulders. Doesn't get but he wins the fight regardless. Enough time in the end, potentially stays right down to the wire, 0.49. And a great play by Davies. Last round before the switch. Everybody's looking towards Crew, expecting the big names of Kesnet and Melzer to be their highest performers, and they have been in the map so far. But Davies is sneakily good. And he's excellent in those kind of positions. He looked very precise with that kill in hell and then plays the clutch 1v1 beautifully. Forcing the peek out of Stella and punishing for it. Oh, my bad. Are you okay? And now, I think this is it. If 100 Thieves don't win this round, I don't see a way back. And even if they do, it's going to be tough. What a wide swing. Yeah, first duel taken, first fight taken, and he does get rewarded. Oh, to push them back away once more. Okay, evened out a little bit now into that 4v4. They look like they want to rush right into this one, into that B-split again, but these anchoring players of Crew are making it a nightmare. There was a Oma TP being used. They are really just falling apart. Wait, that's actually a crazy play. All the way through, player cleaned up, just down to Nags now. Bang ulted into the front site, and everybody on Crew thought he was in back B. Yeah, they were using util. They were using util, they turned their eyes, and Nags is left in an unwinnable spot. Bang's just played the mind games to get 100 Thieves to 3. And might have given them the slimmest lifeline to hold on. 3 rounds is what they've gained, and now we move over and swap the sides around as well. Crew's attack side on Ascent. In the past, it hasn't looked as good, but we'll find out what our analysts have to say as well as they break down that first half. Thank you very much, Brett and Josh. A little bit of first half dominance there out of Crew, 93. Though I will say, they did what Josh asked of them once they were down 6-0, right, in the half. He said, get half of the rounds here, pistol in the next half, and maybe 100 Thieves still has some life. Yeah, maybe. They managed to recover this to a doable half, but we were still seeing so many of the issues that we were talking about in the pre-show rearing their head again for 100 Thieves. In these mid-rounds, they were leaving gaps. The coordination wasn't quite on point, and on the other side, Crew saw each of those gaps and feasted. Kesnet and Melzer were going insane that half. Yeah, Kesnet actually was just popping off. He didn't look like any player in this server was scared, was anyone gonna challenge him at any given time this half. He just dominated 100 Thieves, and 100 Thieves, like you mentioned, their mid-rounds, very lacking, right? They weren't drawing out utility, so when they finally pounced on the sites, they were just getting util dumped on them, and Kesnet coming and cleaning it all up. Yeah, and even the rounds they were winning, it felt like they were playing it from that. They were taking damage from the util. Well, Crew was set up to win, but someone like Bang, occasionally, maybe Cryo would find a couple big. जिंदा है कि मर गया है लौड़े? क्या हुआ? जिंदा है कि क्या कर रहा है? मैं बैठा हूँ यहीं पे गाड़ी में। गाड़ी में बैठा है? वो रूल्स पढ़ना पड़ेगा। इंटरव्यू होगा, ले लेंगे, फिर मैं रेड मैच ज्वाइन कर लाऊंगा। पढ़ ले।
here, but Crew can run into a wall. This is the defensive side of Ascent, but 100 Thieves is lacking that sense of nothing in the middle. So 100 Thieves to claim that pistol round, like the desk was hammering home, and there is reason as well to believe that they could potentially mount a bit of a comeback. Crew haven't looked the best on their attack side of Ascent in the past yet. What an uphill battle it's going to be. I think this pistol is actually a big one. Just don't even give 100 Thieves an inch here. Fast, paranoia. Lovely knife, they'll push them all the way back, and that is great spam damage. As they're being forced all the way back from that one. Dropped down to 15 health, no kill claim, but it is a herd of elephants just stomping their way through mid, trying to make their way all the way through. Look at this deep push through A main as well. It's been covered from many angles, and 100 Thieves have really surrounded almost every position, but they've lacked a lot of that info in mid. They've given up the space now, and look at this. 3 around the roses. Crew just running rings around their opponents. Derek has to be the man of the hour now, anchoring at the back of the site. Stalwart defender. Knows is being approached from this position now. Dropped down onto the corner. One shot found. Will he claim the second one? Is that jumping right click? Klaus ends up being favored in it. Ahead. 3v3 plant goes down. Nobody scanned by the dart that Klaus sent out, as Davies was looking to play aggressive. So this is as straight up as it gets in the retake. Still a paranoia available for Bang. Massive field of units, cleans all the way through into the side. 2 players watched out for. Kills are going to found though. Davies working magic with the frenzy. And that's it. With the safest hands in the world, managing to close that one out to the pistol. Ghetto rules, capture rules. Okay. Ghetto territories are colored section. This is that are marked on the map of Ghetto. Being on the HQ of the gang, you are required to do all the requirements of the gang. 1. It's forbidden to visit I-series without I-series. What you said? Right, talk to dispute leader for all organization. Oh yeah, go on your map. And then can you see It's like forbidden to push kill gang members. yeah. If you're standing on a queue, it's forbidden to start shooting from your own factory. Gang members get chased by cops. Cannot for 5 minutes. All gang members must wear There's license sender. 180. Go there and just click on the. It is allowed to rob, nab people in gate. City. Yeah, on your map, can you see something named what's it called? This could get dangerous now. It's not like there's any weapon upgrades, but there's still 4 sheriffs that they're up against. मिल गया मुझे गेटो रूल्स बोलते से माँ की आँख आज बहुत कुछ सीख लिया रे Just like the pistol where Crew faked the catwalk and went back to B. This time they cut noise, re-hit. And 100 Thieves have been baited into the rotate both times. And they contacted all through. Nobody to meet them. Stella playing a very passive position, but now he's going to be hearing them shouting all the way up. Back of the A side. Fans going to start to go down here. Spare placing themselves into this post plan. What utility do they really have online? Darts online. Still with the flash over the top. Davies, I believe. Yeah, it was. The team flash by the deck now as well. Dart needs to be taken care of. It is, but the scans close. Is it going to be spammed? There's no answer in sight. Disposal. 100 Thieves simply weren't able to take advantage of that dart. One scan off, there was certainly chances. इंटरव्यू लेगा ना अभी इंटरव्यू लेगा ना वो इंटरव्यू लेगा पढ़
गेटो रूल्स एक बार ज्वाइन कर लिया ना, मस्त मस्त अपने पास वाह। कर तो अभी रूल्स पढ़ते हैं अपन, गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं। गेम क्यों बंद हो रहा है यार, सेटिंग में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले ए बंद क्यों हो गया ये? ग्रैंड आरपी बंद हो, चल ठीक है, थोड़ा सा क्लिप बंद ही रहने दो। ओके तो गेट आउट एंट्री अलर्ट सेक्शन, ठीक है, हिंदी मैप से समझ गया। बीइंग ऑन हाई, ये बीइंग ऑन एचक्यू, ओके एचक्यू का मतलब क्या है? ठीक है जो भी है। द गैंग आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एचक्यू द गैंग फॉरबिडन टू विजिट विदाउट आईसी रीजन। आईसी रीजन मतलब रीजन, आई थिंक इसका तो इस पे एक वीडियो बनना चाहिए प्रॉपर्ली। क्या लगता है? ऐसा छोटे मोटे वीडियो भी बना लेंगे ना सॉफ्टवेयर होते। On the HQ of the gang, it is popular to visualize like raid, talk to disputees, leaders of your organization, to push kill gang members on HQ. You're not allowed to enter on HQ another gang without permission. Okay, if you're standing on your HQ, it is forbidden to start shooting. If gang members gets chased by cops gangs, he cannot get back to his HQ for 5 minutes. All gang members must wear top fun gang color. It is allowed to rob, kidnap people only in ghetto or outside the city. Gang members on their HQ can kill everybody in case if you do not agree with their demands. It is allowed to rob, okay, wrong. To force people into doing animation. Exceptions are raising hands or getting on knees only for cops. Yeah? Everybody in case you do not agree or kill कर सकते हैं. I can't help but think as well that you see Cryo win those most of the time last year. Doing any. It's been quite the fall from grace watching this 100 Thieves team, but that gives such great opportunities to teams like Crew to capitalize. If a person complies with given demand, kill them. Counterplay from Crew as yet.
Jail 120 minutes. DeMorgan 180 minute. DeMorgan क्या होता है? Rifle in the hands of Derek. We're creeping ever closer now to that map point. Taking control steadily there, getting their way up to the scat. Kills and fam, guess what? Weapon's not too good for it. No command now, just gonna be ripping through them. That's Asana's just to make sure to deny this, but look at this context. Leaders or deputies must set the time for robbery within 1 to 2 hours before starting robbery. Each robbery of fort Guru has अरे सुन ना hold on तू हेलो तू बोल। सिर्फ SSD लिया मतलब 500 GB या 1000 GB का गेम फास्ट चलेगा क्या? हाँ बेटर पड़ेगा ना FPS स्पीड हो जाता है, बढ़ेगा ही ना बेटर। तो PC बनाने टाइम से HDD लगाने का फिर SSD SSD ओनली SSD भाई। HDD के बहुत देखने का ही नहीं, आँख बंद हो गया मैं चल HDD देखने का ही नहीं देखने भाई, पाप लगेगा पाप। जो पैसा डाला है ना बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तू सोचेगा इतना पैसा डाला है स्पीड नहीं चल रहा है, रीजन यही है। SSD create file failed with 32 launch error। अबे क्या launch error NVMe ही डाल देगा 0.3। मेरा अभी वही डाला है NVMe 0.3। क्या SSD है ना? के हाँ SSD के 3 टाइप, वर मिड एंड NVMe। इसमें क्या है? फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। Leaders or deputies must set the time for robbery। टाइम सेट करेंगे 1-2 घंटे के पहले चोरी करने के। Each robbery of Fort Sankudo has to have cooldown of 2 hours। Okay, 2 घंटे का cooldown होना चाहिए। Gangs and families including unofficial organ cannot take hostage and rob from event which just finished। Okay, ये तो गेटो रूल्स हो गया। कैप्चर रूल्स, कैप्चर ऑफ टेरिटरी इज एन OCC सिचुएशन। ये OCC क्या होता है मैच? कुछ नहीं। आउट ऑफ कैरेक्टर, आउट ऑफ कैरेक्टर। It is forbidden for अगर गैंग मेंबर में ज्वाइन हो गया ना तो किसी को भी रॉब कर सकता है और 50,000 तक लूट सकता है जगह पे। 50,000 लूट सकता है। It is forbidden for है ना कि सोएगा तू आज, मैं तो खेल रहा हूँ। It is forbidden for state employees to interrupt capture। कैप्चर रूल्स यूट्यूब में सुनता हूँ। ग्रैंड RP कैप्चर रूल्स 10 basic GTA5 rules। This is a pretty common error message for easy anti-cheat. I'm going to show you how to fix this. First of all, you want to crack open your file explorer and you want to go to where easy anti-cheat is installed. Not in terms of where it's installed inside of a game, but the program files times 86. And there should be a folder called Easy Anti-Cheat. If you pop into this, you can see that there is a file called easyanticheat.sys or system, whatever it's called. Anyways, all you have to do is delete this file. So just get rid of it, you don't need it. And make sure you empty your recycle bin just to be sure. And if you go back to your game which is broken, for me for some reason I'm trying to play this game. If you boot it up without
restarting your 4 attack computer, you should and see that 4 the system defense file actually allowed reappears. per From game. here, the game should 1 gang. launch with no Leader must issues, inform provided, of in course, the Discord other issue no doesn't more than 30 minutes or recognize. no less than 20 minutes before it starts. Huh? Leader must be informed, okay. After the capture, both gangs get a freeze for 25 minutes. Other gangs cannot capture those gangs for 25 minutes. It is forbidden to do a capture for gangs that do not have leader. Okay. If the gang is taking a part in a robbery for force and grow, it is forbidden to do a capture of territory of gang for 20 minutes prior to the robbery. I've said during a robbery, I've said, and 10 minutes after the end of the functionality of robbery. Okay, 20 मिनट Yeah. नहीं समझ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ. It is forbidden to capture territory of gang for 20 minutes prior to the robbery. Okay. And 10 minutes after the functionality of okay. 20 मिनट पहले कुछ नहीं करने का और 10 मिनट के बाद रॉबरी के 10 मिनट बाद शांति रखने का. 10 minimum number ये of बोल रहा है कि इसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? इस्माइल. बोल रहा है HXT और उससे कुछ नहीं होता. कौन है 60? कौन है ये? ऐसे SSD से FPS इंक्रीज नहीं होता बोलता. FPS नहीं इंक्रीज होता, स्पीड इंक्रीज होता है. गेम का. तेरा सिस्टम का रीबूट बोल सब कुछ इंक्रीज होता है. FPS थोड़ी इंक्रीज होता है. FPS और SSD का कोई कनेक्शन नहीं है. ग्राफिक तेरे को क्या चाहिए वैसे? अब करना क्या था वो सबका? स्मूथ चले और कुछ नहीं. 11 maximum members of the participant is 10 people. Okay. Capture my participants. Minimum 2.10. 2.2. It is forbidden to change the terms of the capture. Okay. The defense side must accept the terms of the attack side. Gang must start capture exactly at the time in Discord and be at कितना घटिया स्किन है भाई ये. क्या देख रहा था? बैटल पास लीक्स. गेम चालू. चल देखते थे. क्या? Let's see. किसका भाई किसकी गांड? भूख लगा है मैच. हाँ मेरे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दे तो लगता है. ऑर्डर नहीं कर रहा भाई. कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा. बहुत पैसा जाता है ऑर्डर करने में. 400 रुपए जाता है बेंच. Damn.
go to the advanced graphics settings here, you do. So that's exactly what I want to show you guys today. So this is really going to the point being 65 on the kill, copying them over easier and just color. And so spotting enemies I find is a bit easier. Another setting that I've adjusted on the Zowie is the gamma value in Nvidia's control panel. If your monitor doesn't have a black, you have an Nvidia GPU setting you should be using instead of using filters cause you frame drops. What you should do is go into your Nvidia control panel, go into adjust desktop color settings, and then pick your monitor that you game on. Uncheck override to reference mode if it is checked, and then you go down to digital vibrance. This gives you the same effects as the Nvidia filters that you would be using them for, but it doesn't take a hit off of your GPU. You have an Nvidia GPU. And you can put my settings. So brightness, 50%, contrast, 68, hue, 180, saturation, 79. Then you want to go into advanced. So, and you can copy my settings. So brightness, 50%, contrast. इधर हुआ क्या तेरा गैंग जॉइन अरे बोल गैंग जॉइन हुआ कि नहीं पढ़ रहा हूँ अभी भी ना रूल्स बहुत सारा So करीबन 60 के ऊपर रूल्स you want to make. Here's the first thing that you should do right after getting an Nvidia graphics card. Download and install Nvidia GeForce Experience. during the capture it is Settings. prohibited to Turn on use the any ANIKET row overlay toggle. Once you turn it on, click on Settings. use After you see this, created click on phone Done. prohibited to Then use click on trucks Performance. Then enable automatic tuning. Read this disclaimer, and if you're okay with it, go ahead and enable it. That's going to scan your system and automatically optimize your games for more FPS. Do you want to make your Valorant equal as an adjustment? This is. Something like that. So it's that I think Nvidia driver, and I installed it using the Nvidia driver package right here. So this is the Nvidia driver package, and I just installed it using that. And if you're not on the latest driver, please just make sure you're on the latest driver because you may not have some of these features if you're not on the latest drivers. So out of the box, it usually says let the 3D application decide. Most scenario and cases, a lot of people are graphics are like me, and they fails and open it in AMD, that fancy mumbo guide. So if you are on a 20 series card and newer, so leave everything here in default, and the only things that you should be changing low latency. I'm gonna ask a thank you, lady. Set this to on. Now, if you're on a laptop, unfortunately, the only setting you're going to have is Ultra, and there's not really any way to change that. Yeah. I thought usually when they're done, they just put them outside. Just make sure this low latency when they're done with their time. If you have a G-Sync compatible monitor, I would actually recommend leaving this on now. I used to say that G-Sync kind of was bad, but if it's not just for maximum performance on a modern graphics card, may actually cause more issues than no issues. As proven by my friend who decided to follow an Nvidia settings video when he had a 40 series card, and all of a sudden out of nowhere, his system was just shutting off, and that is because he put everything on prefer maximum performance. And optimal power instead of prefer maximum performance, and that not only prefer maximum performance will actually help your performance. If
you're on a newer Nvidia card, like I'd say 30 series. हुआ क्या तेरा? हम्म हुआ क्या तेरा? 20 मिनट है और जेल में। Is it newer? I guess if you're crazy, then you could set the working, and that it may be like a really bad thing because you're just like giving away performance for power saving features. But let me tell you this: Nvidia's official claims say that optimal power makes sure that the GPU is optimally operating in its optimal power range. So essentially, if you're confused by that sentence, which I mean I didn't say it in the greatest fashion, but essentially, tend to change. No, low latency. Yeah, officer, I'm done. Hello, officer. Okay. Follow me. Oh, And set this to on. Now, if you're on a laptop, unfortunately, the only setting you're going to have is ultra. And that video about why G-Sync is actually good, and that you have to change everything to the maximum performance settings, like go here, prefer. Maximum performance, prefer पढ़ performance. लिया turf rules. Modern day and age, that is completely invalid. In fact, setting this to prefer maximum performance on a modern graphics card may actually cause more issues than was just shutting. You did not have enough time. It was just. Generally, the reason to change this from optimal, tend to change that from optimal. The performance from does is it's limited. Now, 10 gigabyte is the safe option. If you don't have that much space on your computer, so easy to your cache size. Most of you probably just leave this on driver default. There's no real reason to change it. Although I have noticed that setting this to 10 gig or higher actually reduces stutters, especially if you're on a lower end graphics card. I recommend setting this to 10 gigabyte or unlimited. Now, 10 gigabyte is the safe option if you don't have that much space on your computer. So the easiest way to check that is just go to your file explorer, click on this PC, and then just see how much space you have. Because if you set the shader cache size to unlimited, it never deletes the cache. So that way, it will keep all your shaders cached forever, basically, until you reinstall the driver. So, most of you, probably 10 gigabyte is the safe option, but if you don't really care, you have like all the space in the world, or like latest tech tips to about. So, essentially, texture filtering quality, all it really does is make the textures look blocky, according to some people. But a common misconception as well is that setting this to high performance will actually give you more performance, when in fact it will not give you more performance. It will give you less performance. So just made that mistake. But as for like vertical setting, like I am, you have to leave that setting on, or otherwise you're not getting the benefit. Just make sure that that's set to on or ultra if you're on a laptop, and call it a day. You don't really need to change anything else. To use display scaling and talking to Nvidia, I can tell you right now that this is incorrect. So display scaling is when it is bad. It doesn't muck up this up here. Ensure that you're running the most up-to-date resolution we can
A lot of system, fresh rate, hit apply, another prompt will come up, just yes, change, and literally paint dual graphics. You can just do not worry, this is not it's not check marks, but check mark it, and then do not change the priority. Now I've seen tons. How's it going, everyone? It is Pep. It's time to be once we've set up हुआ क्या तेरा? क्या? पढ़ के हाँ वीडियो देख रहा हूँ। देख देख Alright. Now let go of you. This'll work. I will let. Oh my gosh. I will let. Oh my god. Today, Let go of you and get you out of cuffs. Oh my gosh. There we go. Jeez. You can. Sorry. Officer, hello. Oh yeah. Officer, oh my god. Oh. Oh yeah. Daddy. Officer James. होने आया 10 मिनट बाकी। ओके गेटो रूल तो पढ़ लिया, जनरल रूल पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? जनरल रूल इन कैरेक्टर आई सी तो मैं गेम रिस्टार्ट करता। ओ सी आउट ऑफ कैरेक्टर पावर गेमिंग पीजी डेथ मैचिंग डीएम रिवेंज किलिंग आरके ए रेडी मैं जाता हूँ इंटरव्यू। ये किधर आ गया? ड्राइवर हॉस्पिटल भेज किसी ने। हॉस्पिटल भेज दिया।